नमस्कार। आज हम बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर थर्ड में आने वाला सब्जेक्ट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट विद इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बीसीएलएस मॉड्यूल का कोर्स कंटेंट यहाँ पर देखेंगे, या कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी जो पहली यूनिट है उसमें है, पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, देन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, then role and responsibility of a nurse in medical and surgical setting, then outpatient department, inpatient unit, intensive care unit, introduction to medical and surgical asepsis, इसमें inflammation, infection, wound healing stages, influencing factors, then wound care and dressing technique, care of surgical patient, pre-operative, post-operative, then alternative therapies used in caring for patients with medical surgical disorders. Then आती है इसकी सेकेंड यूनिट में है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, क्लासिफिकेशन, ओटी डिजाइन, स्टाफिंग, members of the OT team, duties and responsibilities of the nurse in OT, position and draping for common surgical procedure, instruments, sutures and suture materials, equipment for common surgical procedures, disinfection and sterilization of equipment, preparation of sets for common surgical procedures, scrubbing procedure, gowning, masking and gloving, then monitoring the patient during the procedure, maintenance of the therapeutic environment in OT, assisting in major and minor operation, handling specimen, prevention of accidents and hazards in OT, anesthesia types, method of administration, effects and stages, equipments and drugs and legal aspects. Then आती है थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में क्या है, नर्सिंग केयर पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, fluid and electrolyte imbalance, shock, pain. The fourth unit में क्या है, nursing management of patient with respiratory problems, review of anatomy and physiology of respiratory system, nursing assessment, history taking, physical assessment and diagnostic test, common respiratory problems में upper respiratory tract infection, chronic obstructive pulmonary disease, pleural effusion, empyema, bronchiectasis, pneumonia, lung abscess, cyst and tumors, chest injuries, acute respiratory distress syndrome, pulmonary embolism, health behaviors to prevent respiratory illness. देन आती है फिफ्थ यूनिट में क्या क्या है, फिफ्थ यूनिट में है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम, द नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, फिर जीआई इन्वेस्टिगेशन आते हैं। देन कॉमन जीआई डिसऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं जिसमें ओरल कैविटी में लिप्स, गम्स एंड टीथ, जीआई में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्यूमर्स, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस। देन आता है पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, देन माल अब्जॉर्प्शन, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, देन हेमरॉइड, फिशर, फिस्टुला, देन पैंक्रियास, इन्फ्लामेशन, सिस्ट एंड ट्यूमर्स, देन लीवर में इन्फ्लामेशन, सिस्ट, एब्सेस, सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक फेलियर, ट्यूमर, गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, कोलिलिथियासिस, ट्यूमर, gastric decompression, gavas and stomach care, different feeding techniques, then alternative therapies, drugs used in treatment of disorder of digestive system में कौन कौन सी अल्टरनेटिव थेरेपी और ड्रग यूज होती हैं वो आता है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ यूनिट।
6 यूनिट में है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, जिसमें रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, then nursing assessment, history and physical assessment, then invasive and non-invasive cardiac procedures, then disorder of vascular system, hypertension, arteriosclerosis, Raynaud's disease, aneurysm and peripheral vascular disorders, then coronary artery disease, coronary atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, then valvular disorder में congenital and acquired, then आता है rheumatic heart disease जिसमें pericarditis, myocarditis, endocarditis and cardiomyopathies, then cardiac dysrhythmias and heart block, then congestive heart failure, cor pulmonale, pulmonary edema, cardiogenic shock, cardiac tamponade, cardiopulmonary arrest. then आती है 7th unit, nursing management of patient with disorders of blood, review of anatomy and physiology of blood, the nursing assessment में history, physical assessment and diagnostic test, anemia, polycythemia, bleeding disorder में clotting factors, defects, platelet defects, thalassemia, leukemia, leukopenia, agranulocytosis, lymphomas and myelomas, तो lymphomas and myelomas. then आती है 8th unit, 8th unit में क्या क्या है, 8th unit में nursing management of patient with disorders of endocrine system, जिसमें review of anatomy and physiology of endocrine system, then nursing assessment, history and physical assessment, disorder of thyroid and parathyroid, adrenal and pituitary hypo tumors and diabetes mellitus. then आता है 9th unit, 9th unit में है nursing management of patient with disorders of integumentary system, review of anatomy and physiology of skin, then nursing assessment, history and physical assessment, infection and infestation, dermatitis, then dermatosis, infectious and non-infectious, acne, allergies, eczema and pemphigus, then psoriasis, malignant melanoma, alopecia, special therapies, alternative therapies, drug use in treatment of disorder of integumentary system. then है 10th unit, 10th unit में क्या क्या है, nursing management of patient with musculoskeletal problems, इसमें review of anatomy and physiology of the musculoskeletal system, then nursing assessment में history and physical assessment, diagnostic test, then musculoskeletal trauma, dislocation, fracture, sprain, strain, contusion, amputation, then musculoskeletal infection and tumors, osteomyelitis, benign and malignant tumor, orthopedic modalities जिसमें कि cast, splint, traction, crutch walking, musculoskeletal inflammation में bursitis, synovitis, arthritis, special therapies, alternative therapies, then metabolic bone disorders, osteoporosis, osteomalacia and Paget's disease, then spinal column defects and deformities, tumor, prolapsed intervertebral disc, port spine, then rehabilitation, prosthesis, replacement surgeries. then आती है 11th unit जिसमें nursing management of patient with communicable disease, overview of infectious disease and infectious process, nursing assessment, history and physical assessment, diagnostic test, tuberculosis, diarrheal disease, hepatitis A, E or typhoid, then herpes, chickenpox, smallpox, measles, mumps, influenza, then meningitis, gas gangrene, leprosy, then dengue, plague, malaria, chikungunya, swine flu, filariasis, diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, COVID-19, special infection control measures, notification, isolation, quarantine and immunization.
देन आता है इसका क्लिनिकल प्रैक्टिकम। क्लिनिकल प्रैक्टिकम में क्या क्या है? अब इसमें है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेडिकल कंडीशंस, जिसमें कि स्किल लैब में आएगा। इसमें यूज ऑफ मैनिकिन्स एंड सिमुलेटर्स, इंट्रावेनस थेरेपी, ऑक्सीजन थ्रू मास्क, ऑक्सीजन थ्रू नेजल प्रोंग्स, वेंचुरी मास्क, देन नेबुलाइजेशन, देन चेस्ट फिजियोथेरेपी। देन इसमें क्लिनिकल पोस्टिंग में जनरल मेडिसिन में इंट्रावेनस थेरेपी, आईवी कैनुलेशन, IV maintenance and monitoring, administration of IV medication, then care of patient with central line, preparation and assisting and monitoring of patient undergoing diagnostic procedures such as thoracentesis, abdominal paracentesis, management patient with respiratory problem, administration of oxygen through mask, nasal prong, venturi mask, pulse oximetry, nebulization, chest physiotherapy, postural drainage, oropharyngeal suctioning, care of patient with chest drainage, diet planning, high protein diet, diabetic diet, insulin administration, monitoring GRBS। देन आता है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सर्जिकल कंडीशन, जिसमें कि यूज ऑफ मैनिकिन्स एंड सिमुलेटर्स, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, सर्जिकल ड्रेसिंग, सुचर रिमूवल, कोलोस्टोमी केयर, इलेस्टोमी केयर, एंटेरल फीडिंग, जनरल सर्जरी वार्ड। इसमें प्रोसीजर कॉम्पिटेंसीज एंड क्लिनिकल स्किल्स में प्री ऑपरेटिव केयर, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज, पेन असेसमेंट, पेन मैनेजमेंट, assisting diagnostic procedure and aftercare patient undergoing colonoscopy, ERCP, endoscopy, liver biopsy, then nasogastric aspiration, gastrostomy, jejunostomy, feeds, ileostomy, colostomy care, surgical dressing, suture removal, surgical soak, sits, bath, care of the drain, then nursing management of patient with cardiac conditions। इसमें cardiovascular assessment, interpreting ECG, BLS, BCLS, CPR, ABG analysis, taking blood sample, arterial blood gas analysis, interpretation। then cardiology ward में cardiac monitoring, recording and interpreting ECG, arterial blood gas analysis, interpretation, administer cardiac drugs, preparation and aftercare of patient for cardiac catheterization, CPR, collection of blood sample for blood grouping, cross matching, blood sugar, serum electrolytes, assisting with blood transfusion, assisting for bone marrow aspiration, application of anti-embolism stocking TED hose, application maintenance of sequential compression devices, the nursing management of patient with disorders of integumentary system, जिसमें आता है यूज ऑफ मैनिकिन सिमुलेटर, एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन, डर्मेटोलॉजी वार्ड। इसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन, स्किन एलर्जी टेस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन एंड मेडिकेटेड वॉथ। देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें बैरियर नर्सिंग, रिवर्स बैरियर नर्सिंग, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। देन बैरियर नर्सिंग, रिवर्स बैरियर नर्सिंग, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यूज ऑफ PPE, needle stick and sharp injury prevention, cleaning and disinfection, respiratory hygiene, waste disposal and safe injection practices। The nursing management of patient with musculoskeletal problems, जिसमें कि range of motion exercise, muscle strengthening exercise, crutch walking, orthopedic ward, preparation of patient with myelogram, CT, MRI, assisting with application and removal of POP cast, preparation, assisting and aftercare patient with skin traction, skeletal traction, care of orthotics, muscle strengthening exercise, crutch walking, rehabilitation। The nursing management of patient in operative rooms, scrubbing, gowning, gloving, orientate to instrument for common surgery, orient to suture material, positioning, इसमें ऑपरेशन थिएटर में position and wrapping, preparation of operation table, setup of trolley with instrument, assisting in major and minor operation, disinfection and sterilization of equipment, scrubbing procedure,
gowning, masking and gloving, intraoperative monitoring. Thank you.